processes in the eolian landforms, that means the work of rivers in the desert. Fine. So this is the handout for that. And I am giving you this of a very good book. The reason is you see the language they use, and this is the language that should come in the examination also. So what are drumlins? What are drumlins? क्या क्या keywords है regarding drumlins? What are they? Rounded hills. Rounded hills. Keywords क्या? Ellipsoidal hills or whaleback topography or not basket of egg topography or inverted spoon topography. Fine. Second key point, always occurs in group in glacial lowland या highlands. In the glacial lowlands and therefore known as basket of egg topography. Now before I proceed, टेस्ट के लिए यहाँ तक का पोर्शन ठीक है? मतलब पूरा जियोमॉर्फोलॉजी जो बचा हुआ है, I will give you मंडे तक का टाइम also. या फिर चैनल मॉर्फोलॉजी तक ही रखना है और लिखना है. अभी कर लो जियोमॉर्फोलॉजी, बाद में नहीं होने वाला जियोमॉर्फोलॉजी. अब भी ही टाइम है जियोमॉर्फोलॉजी डिटेल में करने का. मैं चाहता हूँ कि हर एक टेस्ट लिखिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो लिखो और सबमिट करो उसके आपके पोर्टल पे. फाइन. सो बिकॉज अभी अगर हुआ जियोमॉर्फोलॉजी तो फाइन, इसके बाद हम देखेंगे भी नहीं जियोमॉर्फोलॉजी की तरफ. आप भी भूल जाओगे, मैं भी भूल जाऊंगा. मतलब आई एम रियली टेलिंग यू, आई हैव टू रिवाइज जियोमॉर्फोलॉजी के 2-3 साइकिल्स, अदरवाइज मैं भूल जाता हूँ इतने सालों से पढ़ाने के बाद भी. जियोमॉर्फोलॉजी इज सो टफ. यही अगर थॉट होता तो एग्जैक्टली मैं 2:30 बजे आऊंगा, कुछ भी बकवास करूंगा, आपको लगेगा सही बोल रहे सर. फाइन. दैट इज व्हाट इज द थॉट. जियोमॉर्फोलॉजी हैज टू बी एग्जैक्टली pinpoint. I forget. For example, someone asked me today the concept of this thing. I didn't even remember किसका concept है वो, किसका. I didn't remember that. That is what is the geomorphology. Otherwise thought, because there are no thinkers other in any other sub part except for geomorphology and thought. Thought में वही thinkers है. Positivism, negativism, welfareism, humanism, radicalism. So thinkers are limited. Geomorphology में नहीं है, जैसे you will understand here. So drumlins, ये है top view of a drumlins. Can I say the side view of a drumlin is this way? So they are elongated. Which side is the up glacial side? Up glacial. Which side is the down glacial side? This is the down glacial side. Which side is elongated? Up glacial side or down glacial side? The down glacial side is elongated. Fine. So tell me, drumlins are the feature of glacial erosion or glacial deposition, or both? कैसे? As a student of geomorphology, how you will say this is a feature of erosion? This is erosional and this is deposition. ठीक है, don't write anything. ये wrong है. This is not the case. This is depositional feature, इसलिए एक के ऊपर बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया and steep हो गया. Fine. And then जब sediments बढ़ गए, then over the period of time, very fine sediments were taken by the river water, and these fine sediments were then carried, and thus this part has become very elongated. So ये elongated है, that means this is an example of erosion.
ये elongated नहीं है, that means this is a feature of deposition. Fine. So, but what is the key? It is, but the crux is key. It is both erosional and depositional feature because one side is steep, one side is gentle. Fine. रोशे माउंटेन्स, क्रैग एंड टेल टोपोग्राफी याद करना. विच साइड इज जेंटल? जहाँ पे नदी रिवर लेके जा रही है. सो जनरली द स्टीप साइड जो है इट इज जनरली ओनली ड्यू टू डिपोजिशन इन द लो लैंड रीजन, और जो जेंटल साइड है वो हमेशा ड्यू टू इरोजन होती है, एक्सेप्ट फॉर रिवर. रिवर में टोटली अलग होता है. ही यूज द कंसेप्ट ऑफ अ रिवर. रिवर का टोटली अलग है एंड बाकी के लैंडफॉर्म्स का टोटली अलग है. वी आर गोइंग टू टारगेट 3 questions today, and these 3 questions will mark the end of geomorphology. वैसे technically formality के लिए applied geomorphology बचता है, but these 3 questions, उसमें एक से एक question है glacial cycle of erosion, दूसरा question है arid cycle of erosion, and तीसरा question है difference comparison between the glacial, between the arid and the normal cycle of erosion of Davis. Obviously Davis ही है सब में. Fine. What are they made up of? They are made up of till deposits. Have you written they are made up of till? Glacial till. Right? Formation of drumlins. Formation of drumlins. There are 2 schools. There are 2 schools of regarding the formation of drumlins. There are 2 schools regarding the formation of drumlins. Regarding the formation of drumlins. The school of glacial, the school of erosion, the school of erosion claims, the school of erosion claims that glaciers, that drumlins are made by the erosion of existing sediments, are made by the erosion of existing sediments. देखो इसका ये स्कूल का मतलब है ड्रमलिन इज टोटली एन इरोजनल फीचर. फाइन. इरोजन ऑफ, इसलिए ये रॉन्ग है. फाइन. बट इफ इट इट बट आगे लिखना, इफ द ड्रमलिन्स आर टोटली इरोजनल फीचर, but if the drumlins are totally erosional feature, then drumlins should have more steeper slopes, drumlin should have more steeper slopes, full stop. Why the drumlin should have more steeper slopes if it is totally erosional feature? Because we are not talking here as a river as an agent of erosion. हमने देखा when the glacier is the agent of erosion, it will cut deep, plucking and steepening. Fine. So it should have more steeper slopes. On the other hand, the depositional school advocates that drumlins are totally depositional feature. Drumlins are totally depositional feature. Full stop. The obstruction of the glacier, the obstruction to the flow of the glacier, the obstruction to the flow of the glacier was caused by has caused
Deposition of till has caused deposition of till to form drumlins. To form drumlins. Form drumlins. इमेजिन करो ड्रमलिन्स अगर टोटली डिपोजिशनल फीचर है तो दोनों की हाइट सेम होनी चाहिए, एक साइड डिपोजिशन क्यू एक साइड इरोजन क्यू. फाइन. नेक्स्ट पैराग्राफ. ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, दोनों ये आना चाहिए. बट द रिसेंट स्टडीज हैव शोन that drumlins are formed due to both erosion and deposition. Drumlins are formed due to both erosion and deposition. Over the period of time, due to the obstruction of the snow, glacial till accumulates to form mounds. Mounds मतलब hill like feature. To form mounds. Over the period of time, fluvial processes modify the mounds ब्रैकेट में लिखना, this can be during the interglacial period. Interglacial period means warm period. Next point, the fluvial processes will carry the sediments along with it. And as the finer sediments are removed, the leeward side, you can use the word leeward side, the leeward side gets elongated to form whaleback mound. Known as drumlin. गेटिंग इट? कैसे बन गया ड्रमलिन? ऐसे बहुत जगह डिपॉजिट हो गया, माउंट बन गए जहां जहां ऑब्स्ट्रक्शन था, और जैसे ही ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू हो गया, पानी निकला उसमें से, वाटर ने फाइन सेडिमेंट्स आगे लेके गए. इफ यू कैन सी द सेडिमेंट्स आर बिकमिंग फाइनर. जरूरी नहीं कि आप भी एग्जैक्टली ऐसे बनाओ, एंड इसलिए वो एलोंगेटेड हो गए, ये बन गए ड्रमलिन्स. फाइन. Very direct question in 2013.
बास्केट 15 बास्केट ऑफ फैक्ट टोपोग्राफी. सिर्फ पता होना चाहिए कि इसको बास्केट ऑफ फैक्ट टोपोग्राफी कहते हैं. जैसे एक क्वेश्चन आ सकता है अब, which board topography? बिस्किट बोर्ड टोपोग्राफी. सो उसमें क्या लिखना है? एरेट्स एंड पिरामिडल पीक. प्रॉपरली देखो डायग्राम. There is a difference in the height. Fine. इरोजन से हाइट कम हो जाएगी. स्लोप डिक्लाइन, स्लोप डिक्लाइन, फ्लूवियल. क्योंकि रिवर है नहीं ना. व्हाट इज हैपनिंग? ऑल दिस इज आइस. द आइस इज मेल्टिंग. आइस इज मेल्टिंग. आइस इज टेकिंग द सेडिमेंट्स. अपलिफ्टमेंट हो ही नहीं रहा है इधर. नहीं नहीं नहीं, डिपोजिशन इज नॉट अपलिफ्टमेंट. डिपोजिशन में देयर इज नो रोल ऑफ टेक्टोनिक. Analogy is fine, but deposition is not upliftment. If you are saying that way, it is right. Slope decline है. But don't write that in the answer. Can I rub this part? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है ड्रमलिन्स का? देयर इज नो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बिकॉज ड्रमलिन्स पे एग्रीकल्चर कैसे करोगे? ड्रमलिन्स छोटे है. एक रूम इतनी बड़ी एक ड्रमलिन होती है बस. Yes, they are used for tourism, nothing else. The regions of drumlins are the most short regions for Bollywood songs. हमेशा for Bollywood songs. Songs, right? And पूरा the Lord of Rings movie is totally shot on the glaciated topography of New Zealand. You will find numerous drumlins there. Whether it is the movie Hobbit or whether it is the movie Lord of Rings, you will find mostly it is located in the, totally it has been shot in the regions of glaciated topography. So, अगर लिखना है conclusion में अगर ऐसा question आता है तो you can just remember that they are very picture sick and therefore they can be used for tourism industry. Lowland है glaciers के. Fine. Because they are lowland of glaciers means this is an old stage of glaciers. Again जो important नहीं है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, उसके मैं नोट्स दे रहा हूँ. फाइन. अगर नहीं भी पढ़े आपने प्रिंटेड नोट्स तो भी फाइन. इससे आप आंसर लिख सकते हो जितना आएगा. आउटवॉश प्लेन्स, ओल्ड स्टेज. यहाँ पे दिस आर द लैंड फॉर्म्स
created by fluvia is water. These are completely and इसमें we are going to look at the two landforms. One landform जिसके ऊपर we are going to write is esker. The other landform which जिसके बारे में we are not going to write anything is you have to understand English people. They have habit of simplifying things. सुबह के नाश्ते में उन्होंने जो जो योग करते हैं उन्होंने वो टोपोग्राफी बना दी ग्लेशिएटेड रीजन में. They take biscuit board topography. They take bacon and eggs, basket of egg topography. और उसके बाद वो चाय पीते हैं टी पॉट टोपोग्राफी. Getting it? सारा ये किस में है? ग्लेशिएटेड रीजन्स में. टी पॉट, हाउ इज द टी पॉट? Fine, teapot. Now imagine a land. Teapot topography is nothing but in the glaciated regions, there are mountains followed by lakes. Mountains followed by lakes. And therefore they will call this as teapot topography. Imagination dekho. Getting it? This is what is the teapot topography. केटल कहाँ यूज होती है? Teapot is kettle. Now what are eskers? कल हमने फोटो देखा था. What are eskers? Hills which can meander. Are these hills? कल याद है फोटो, नदी में एक लंबा माउंटेन जा रहा था. सो जब भी लंबा माउंटेन है, यू विल कॉल इट हिल और रिजेस. रिजेस आर दे ग्रेटर इन हाइट? नो. फाइन. वन लैंडफॉर्म विच आई हैव नॉट डन इज एरेटिक्स. आई विल एक्सप्लेन यू दैट. एरेटिक्स इज ऑल्सो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म. वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आएगा. बट बिफोर दैट, अब सी वाटर, ice has got converted into water because it is the old age, and water ka property is two things. Water will engage in sorting of the sediments, that is, it is going to deposit the biggest sediments first, and it is going to take fine sediments, finer sediments, and ultimately the finest sediments back into the river, fine, into the sea. Secondly, water always in the lowland region will start meandering, fine, and thirdly, water obviously may get evaporated also. So when the glacier may, all the sediments that are, if these are the big amount of sediments that are deposited by the glacier, up glaciers have started becoming rivers, and because of this the river will start flowing. Up this river will start taking the sediments along with it, and as the river will meander, the sediments bhi aise jayenge, but over the period of time the river ka water will get evaporated, and thus we will have long narrow ridges which are totally depositional feature. Yahan pe there is no confusion whether erosional or depositional feature, and these are known as eskers.
They are one of the most beautiful landforms on the earth. Why? Because if the water does not get evaporate, water will form a lake here. And sediments ऐसे रहेंगे. Sediments में, because this sediment is still, मैंने क्या बोला, glacial का sediments are very very fine. Fine. So this sediments, because very fine, they will absorb the water. बाकी का waters evaporate हो जाएगा, ये lake बन जाएगा. So as a result of this, ये ऐसे hills बनेंगे. Over thousands of years, उन hills के ऊपर जंगल बनेंगे. And thus, eskers will look as if समंदर के अंदर जंगल ऐसे जा रहा है, just like rivers. And these are what are known as eskers. Fine. So can I say long, narrow, sinuous, या meandering ridges which are made up of glacial till having dense vegetation? Fine. They are formed due to fluvio-glacial deposits. After the end of glacial ka mature period, as the glacier gets converted into rivers, the rivers will start meandering and doing deposition because they are flowing in the lowland region. As they do deposition, the sediments get collected over the period of time. Over the period of time, due to the porosity and permeability of the rocks, see the words. Why I cannot give you a printed notes of this, because ये कहीं नहीं mentioned है. Due to the porosity and the permeability of the rocks, the water either permeable है तो जाके नीचे deposit हो जाएगा to form lakes, या porous है तो it will be absorbed by the sediments. The water will get evaporated or water will disappear and the sediments will remain there. After the end of Pleistocene glaciation, when the temperature becomes warmer due to the presence of water, these regions will develop dense vegetation. Such landscapes which are common in the glaciated regions are known as eskers. Getting it? See why I am not giving you, I am reading what is a esker from Savindra Singh. Esker is long, narrow, sinuous ridges of sand and gravel and are situated in the middle of ground moraines. The sides of the eskers are very steep, they vary in height and width, extends for meters or even for kilometer. Length is the parallel to the direction of ice moved. It is generally believed that water channel is issued from the snout of the glacier due to the melting of the ice. This channel transports fine sediments down the slope. The free flow of this channel is obstructed by any obstacle. Consequently, sediments are deposited, forming long but narrow esker. क्या समझ में आएगा हमें? Getting it? Landforms are very easy. Photo देखने के बाद they become one of the most easiest landforms, but the language has to be slightly different. मतलब language दो type की होनी चाहिए. आपको समझ में आनी चाहिए और आपको समझ में आएगी तो ये examiner को समझ में आएगी language. Fine. So we'll write about eskers. Leave some space for the diagram. Eskers are long, narrow, sinuous ridges. Eskers are long, narrow, sinuous ridges. Which form generally parallel to the direction of glacier. Which form generally parallel to the direction of the glacier. Next point. These are fluvio-glacial landforms. These are fluvio-glacial landforms. These are fluvio-glacial landforms which are formed during the end stage of a glacier. During the end stage of a glacier, when in the lowland, the glacier starts getting converted. When in the lowland, the glaciers undergo ablation.
I was initially giving you the statement when the glacier started melting, but better hai technical word, when the glacier undergoes ablation. You know what is ablation? Melting. Fine. Next. These are composed of sand and gravel. These are composed of sand and gravel. Next point. As the glacier melts, comma, the melt water starts meandering and depositing. The melt water starts meandering and depositing. See, the best glaciers in the world are in Norway. आसपास सारे lakes है. Getting it? You can see how this is meandering, आसपास सारे lakes है. And they are densely vegetated. Most of them are densely vegetated. Next point. Over the period of time, water starts depositing the sediments in the narrow meandering channel. Over the period of time, water starts depositing the sediments in the narrow meandering channel. In the narrow meandering channel. To give rise to long, narrow, sinuous ridges. To give rise to long, narrow, sinuous ridges. Known as eskers. Long, narrow, sinuous ridges known as eskers. Draw this diagram. समझ में आया क्या किया है? ऐसे लाइन बनाओ और यहाँ से स्ट्रेट, ताकि वो 3D लगे. यहाँ से अगर बना सकते हो तो वेरी फाइन. Rest is choice is yours. Whatever I am making, choice is yours. You can show they are found in the lakes also. Zaruri nahi. Draw the next diagram also, which I am making.
This is esker only, the top view, and no need of showing, no need of showing. उसमें क्या है? There is center का part is coming out as if माला है हाथ में. Therefore, they are known as beaded eskers. ये ऊपर से देख रहे हो आप, एस्कर ऐसे जा रहा है, बीच में ऐसे है, फिर से जा रहा है, बीच में ऐसे. क्यों? कुछ नहीं, सिंपल है, डिपोजिशन उस जगह ज्यादा हो गया. Belts will be depositing more over there. इसलिए I have made a separate box and written here that is it is a top view beaded esker. Medicine. Done. What is this? Got it? It is nothing but a esker जो आप ऊपर से देख रहे हो जिसमें माला जैसा beads है, and therefore it is known as an beaded esker. See, you will, if you ever go to Sikkim, Arunachal, you will understand what is glaciated topography. Because Jammu Kashmir, Himachal, उत्तराखंड में तो आजकल कुछ पता ही नहीं लगता, and except कि वहाँ पे coniferous forest है. जम्मू कश्मीर में you will understand what is somewhat Roche Mountain etc. But the real unexplored area is Sikkim. You will find everything here, eskers etc. सब कुछ मिलेगा उसमें. And अब तो मोदी जी ने भी कहा है 15 जगह घूम के आओ 2022 तक. So घूमो. You will, to tell you very frankly, before starting art and culture, just visit National Museum and then start. You will see the difference when you are going to study art and culture. उससे पहले एक बार National Museum जाके आओ. Before studying modern India, उससे पहले एक बार लाल किले का म्यूजियम जाके आओ. It will be much easier for you to relate. Fine. Next. Sometimes esker swell due to extra deposition. Esker swell, SWELL swells due to extra deposition at regular intervals. And such eskers are known as beaded eskers. And the last point,
over the period of time, dense vegetation develops in the regions of eskers. Dense vegetation develops in the regions of eskers. Dense vegetation develop in the regions of eskers, making them one of the top tourist destinations of the world. Making them one of the top tourist destinations of the world. Remember, in Europe, esker tourism is considered as a cultural tourism. What do I mean by cultural tourism? What is cultural tourism? क्या? जो मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए, if you really go to these two museums, that is cultural tourism. Fine? So they consider visiting eskers, visiting some of the dense regions as a cultural tourism. No need of writing. Just the other kind of a depositional feature is knob and kettle. Topography. What is knob? Knob are low, rounded hills in glacial lowlands. These are formed due to lowland में सोचना भी नहीं चाहिए अभी इतना होने के बाद. Formed due to
not at all important, so you can totally skip it. And we now come to the toughest part of geomorphology, right? The last ka, 10 minute, glacial cycle of erosion. I'll try to make it as simple as possible, glacial cycle of erosion. Periglacial nahi, glacial, fine? सबसे पहले माउंटेन है, माउंटेन हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू सर्क. सर्क कैसे बनेगा? हाउ, व्हाट इज सर्क? What is a cirque? U-shaped depression, armchair shaped. So सबसे पहले holes बनेंगे. As the glacier is going downwards, by plucking, it will form small holes, and then these holes will be enlarged. बहुत बड़ा hole जब बनेगा, then if the depth of the hole, if there is, see, imagine there is a mountain now. Fine. In this mountain, first there will be numerous holes that are being formed. Over the period of time, these holes will enlarge and form a larger hole and a larger hole. Getting it? And once this larger hole will form, then these holes will give rise to a depression. And जैसे glacier move कर रहा है, then it will erode the sides of the mountains. And thus, it will entirely become a horseshoe-shaped topography that is known as cirque. Getting it? Once the cirque is formed, हो गया youthful stage. What is cirque? Mountains in the youthful stage. अब old age में what Davis will do? Davis will have to reduce the height. How he is going to reduce the height? Lateral erosion के लिए यही तो, these are the concepts you should understand. This will come with revision. Lateral erosion के लिए there has to be river. River has to meander. Can it do lateral erosion? No. Lateral erosion होगा ही नहीं. Can it do vertical down cutting? Yes, to some extent U-shaped valley बनाएगा. But how is the cirque formed? पीछे की wall कैसे steep बनती है? कल ही लिखा है हमने. How the wall becomes steep? By which process? How the cirque is proper armchair? ये wall कैसे बनी? By plucking. So over the period of time, plucking will occur. So cirque arrests, collapse. Which stage? Mature stage. एक फिर भी बड़ा सर्क बचेगा. देखो उसको साइकिल करना है, तो छोटे छोटे सर्क गायब हो जाएंगे. By plucking and thus parallel retreat. But वो कहेगा parallel retreat नहीं, फिर तो वो पेंग का फॉलोअर हो गया. Fine, वो कहेगा नहीं parallel retreat. He will just say by recession of the walls. So understanding, दो sides से cirque बने हैं. Ultimately there is a parallel retreat. Parallel retreat से the two walls of the cirque collapse, बन गए moraines. Fine. Now the entire landform will have some individual nunataks, mature stage में, मतलब some individual mountains which will be projecting from the top. And ultimately, as the glacier will erode the mountains, there will be, now in the youthful stage of Davis, was the river large or was the river having smaller tributaries? What was the answer? Answer give. What was the river? Large or small? Was it having tributaries? In the youthful stage, there was no tributaries. यहाँ पे glacier को भी tributaries नहीं होगी. In the mature stage, tributaries बनेगी. Glacier बड़ा होगा, there will be tributaries. But देखो डेविस को एक landform explain करना है. Tributaries will join the main glacier, forming mature stage में hanging valleys. Getting it? In the old age, पूरा landform नीचे बन के flat peneplain बन जाएगा. तो youthful stage is difficult. Rocks, कोई बड़े बड़े rocks उठा के लेके गए, गड्ढे बने. गड्ढे बड़े हो गए, depressions बने. फिर ग्लेशियर आइस फंस गया उस डिप्रेशन में, नीचे जा रहा है,
प्लकिंग, और इसलिए सर्क. एक बार सर्क बन गया तो सर्क के there will be numerous cirques on the mountains, all the glaciers will keep on eroding, so सर्क के बीच का wall will keep on reducing, ultimately it will collapse. Mature stage hanging valleys, old age कुछ नहीं. Fine? आसान लग रहा है? Getting it? So don't do this from Savindra Singh गलती से. That is what I said, I have to study many times geomorphology. ये इतना राइटअप निकालने के लिए मुझे 2 घंटे लगे आज सुबह. Fine? Not from, because I don't understand what is written in the Savindra Singh. Getting it? I'll try to make it in as easy language as possible. That is what I said. So, the glacial cycle of erosion. And his normal cycle of erosion was on in which region? In humid temperate या humid tropical region? Humid temperate. So temperate region में there is a snowfall during the winter season. उसको बाकी के चीजें बहुत आसान था, उसको सिर्फ एक बार सर्क बनाना था, बाकी तो कहेगा कि रिवर ही है. Fine? The glacial cycle of erosion. The glacial cycle of erosion was given by Davis in 1906. ओरिजिनल कब दिया था? 1899, उसके 6 साल बाद. Was given by Davis in 1906. On the same lines as the normal cycle of erosion, I am taking this introduction part directly from Savindra Singh. On the same lines as his normal cycle of erosion. Full stop. It follows the sequential development of glaciated landforms. It follows the sequential development of glaciated landforms, passing through the stages of youth, maturity. It follows the sequential development of glacial landforms, passing through the stages of youth, maturity and old age. Youth, maturity and old age. The follower of Davis, Peltier, P-E-L-I-T-E-R, Peltier, the follower of Davis, Peltier, used the same concept to give periglacial cycle of erosion. ये एक अलग cycle है. Periglacial cycle of erosion. Full stop. Periglacial, P-E-R-I. Periglacial cycle of erosion. Fine. इसके नेगेटिव्स क्या होंगे बताओ? लॉन्ग क्रिस्टल स्टेबिलिटी. दूसरा जो डेविस के नेगेटिव्स है वही है. इसका नेगेटिव्स में एक लाइन में दे रहा हूं, दिस साइकिल इज रिजेक्टेड. फाइन, दिस साइकिल इज टोटली रिजेक्टेड. इसलिए 2 घंटे लगे ढूंढने में नेट पे. फाइन, nobody follows this cycle. मतलब not even practical, theory wise also this cycle is rejected except Indian universities.
एंड सार्क यूनिवर्सिटीज। ये सिर्फ आपको सार्क एडिशन के जो बुक्स है उसमें मिलता है, फॉरेन एडिशन के बुक्स में दिस साइकिल इज रिजेक्टेड। इट इज प्रेजेंट ओनली इन द सार्क एडिशन, मतलब साउथ एशिया में ही पढ़ाया जाता है, नॉट इवन इन साउथ ईस्ट एशिया। यूथफुल स्टेज कुछ है ही नहीं इस साइकिल में, मतलब देर इज नो थेरोटिकल बेसिस। यू विल अंडरस्टैंड वाई। मतलब यू सी कि जबरदस्ती सर्ग बनाने के लिए आप पहले गड्ढा बनाएगा, फिर गड्ढे को बड़ा बनाएगा, फिर सर्ग बनाएगा। वो कैसे बनता है एक गड्ढे से ऐसा गड्ढा, वो कैसे, वो एक्सप्लेन नहीं किया है। फाइन, फिर वो पीछे पीछे जाएगा। आप हमेशा कहते हो कि डाउन कटिंग, अब आप पैरेलल रिट्रीट पे क्यों आ गए? यूथफुल स्टेज पिछले बैच में पढ़ाया था, ग्लेशियल साइकिल ऑफ इरोजन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था मुझे भी नहीं पता फिर, बिकॉज उससे पहले राउज में मैं नहीं पढ़ाता था ग्लेशियल साइकिल ऑफ इरोजन। उसका रीज़न ये था, राउज में जितना प्रिंटेड नोट्स में इंस्टीट्यूट देता था उतना ही मुझे पढ़ाना था, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाना था। दैट वाज एन ऑर्डर बाय द मैनेजमेंट, क्योंकि फिर उनका पूरा शेड्यूल खराब हो जाता था। फिर मुझे इंस्ट्रक्ट किया जाता था, अरे ऋषि आसान पढ़ा, नहीं तो बच्चे भाग जाएंगे। बोला सर मैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें पता नहीं कैसे पढ़ाना होता है, आसान पढ़ाते जाओ। मैं बोला डेविस पेंक ये सब नहीं पढ़ाना होता है, पढ़ाना होता है रिवर लैंड फॉर्म्स ये। फिर विनीत सर पढ़ाने लग गए। We have a student here. That is not a problem of Vinith, my very good friend. That is a problem of management. So, next, youth. In this cycle, erosion begins. In this cycle, erosion begins. Upliftment तो सब नहीं हो रहा है, देखो, याद रखो. In this cycle, erosion begins with the development of mountain glaciers. The development of mountain glaciers. Next point. As the glaciers move downwards, hollows and depressions are formed. Hollows and depressions are formed by the process of plucking. By the process of plucking. By the process of plucking. This hollows and depressions. This hollows and depressions due to the frost weathering. अंडरस्टैंडिंग देखो डेविस इसमें कैसे वेदरिंग हो सबको लेके आ रहा है. ड्यू टू द फ्रॉस्ट वेदरिंग will get enlarged to form a U-shaped basin known as cirque. To form a U-shaped basin known as cirque. Getting it? Not explained कि ये गड्ढे ऐसे सर्क कैसे बनेंगे. Form a U-shaped basin known as cirque. So this is what is happening in the youthful stage.
ऑब्वियसली पहले छोटा सर्क बनेगा, नो नीड ऑफ ड्राइंग, मैं जो डॉटेड पार्ट बना रहा हूँ, बट देन ड्यू टू वैलीज डीपनिंग एंड प्लकिंग ये वॉल स्टीप हो जाएगा एंड बड़ा सर्क बनेगा. दिस वन डिप्रेशंस, हॉलोज. See, in the last batch I had taught it, but language was difficult. This is very simplified. Obviously उनका भी right है. Leave some space here, okay? 3 stages में diagram बनाना है हमें, 1, 2 and there is a third stage here. So leave some space. या अगर नीचे तो leave some space down. Can I continue? Over the period of time, the smaller circs will enlarge by the process of abrasion and plucking, to form a very large compound circ. To form a very large compound, मतलब छोटे सर्क्स भी एक बहुत बड़ा सर्क बनाएंगे. To form a very large compound circ. Next point. As the erosion of circ continues, the side walls of the circ become narrow. To form क्या? To form arêtes. You remember what is arête? Fine. To form arêtes. Imagine 3 dimension का कल का डायग्राम. पहले माउंटेन का वॉल्स वॉज वेरी थिक. जैसे ग्लेशियर डेवलप हुआ वो बन गया नैरो एंड बहुत शार्प बन गया और ये बन गया arêtes. Fine. So now this is the diagram. What is the first crack? Berggren. Second crack is known as crevasse, not that important. So understanding in the youthful stage what has formed? Mountains बन गए, arêtes बन गया. जितना पतला बनेगा arête उतना sharp will be the peak and इसलिए horn बन गया.
Can I continue in the mature stage? Is there any doubt? Can I continue now? Mature stage. One erosional landform is remaining, that is hanging valley. बाकी तीनों erosional landform आ गए इसमें. Fine. Lake is not a landform. So सिर्फ hanging valley हमें बनाना है. Hanging valley बनाने के लिए क्या होना चाहिए? Tributary glaciers. So in the mature stage, in this stage, full development of main glacier and their tributary glaciers occurs. Full development of the main glacier and tributary glacier occurs. जैसे rivers का भी full development होता है in the mature stage, वैसे ही main development of the main glacier and the tributary glacier occurs. Differential erosion due to size of the glaciers, comma their mass, slope, debris, mass, slope, debris, etc. gives rise to formation of hanging valleys, as the glaciers, understanding, so underline the word hanging valley. अब hanging valley लिखने के बाद next point should start from a new line, ताकि examiner का ध्यान जाए hanging valley पे. There is no diagram for such. These diagrams are all our innovations. We do not have, Davis did not give any diagram for this. Understood? Next. As the glacier system gets fully developed, the entire region gets covered by ice. Except for the peaks which project over the ice, such peaks are known as NUNATAKS, nunataks. Such peaks are known as nunataks. NUNATAKS. This is an nunatak. पूरा region has been covered by ice. सिर्फ जो top के peaks है वहाँ पे ice cover नहीं है. Getting it? Is it visible, everyone? This is known as nunataks. Next part. At some parts, glacial staircase, underline the word glacial staircase,
वाटरफॉल्स और रैपिड्स है, यहाँ पे वाटरफॉल नहीं कह सकता, वो उसको क्या कहेगा? ग्लेशियल स्टेयरकेस. डेवलप्स ड्यू टू डिफरेंशियल इरोजन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स. Glacial staircase is formed due to the differential erosion of hard and soft rocks. At the end of a mature stage, most of the cirque are eliminated by recession. Most of the cirques are eliminated by recession. Most of the cirques are eliminated by recession. Draw the diagram I am drawing. By recession. Getting it? Eliminated by recession. रिसेशन उसने किसके बदले यूज किया? पैरेलल रिट्रीट के बदले. डोंट राइट पैरेलल रिट्रीट इन डेविस. फाइन. ऐसा नहीं कि आपको समझ में आया कि ये पैरेलल रिट्रीट है तो लिख दिया वहां पैरेलल रिट्रीट, जीरो मिलेगा. दे आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द टेक्निकलिटीज. कोई सीनियर प्रोफेसर मिला पेपर चेक करते समय, यहाँ के वहाँ कंसेप्ट्स डायरेक्ट जीरो. हमें मेंशन ही नहीं करना है पैरेलल रिट्रीट को डेविस में, बट ये कुछ नहीं है, पैरेलल रिट्रीट ही है. ओल्ड एज. क्रिटिसिज्म में, यस क्रिटिसिज्म में ऑब्वियसली करेगा. ओल्ड एज. Criticism is always your words, na? So you can, but not never in theory. Old age. Over the period of time, due to continued erosion, most of the peaks are either lowered or eliminated. Most of the peaks are either lowered or eliminated. There is a dominance of moranic deposits. There is a dominance of moraines. M-O-R-A-N-E-S, moraines. और मोरैनिक डिपॉजिट्स. जो लिखना है वो लिखो. क्या कहा था मैंने? मोरैनिक डिपॉजिट्स आर कोर्स, रिज लाइक है. सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मोरेन्स भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? टिल में. फाइन. द मोरेन्स आर फर्दर इरोडेड. The moraines are further eroded
are further eroded, and the entire topography becomes flat, having a slope of around 5 degrees, resembling a peneplain. The old age ends with the melting of glaciers or with retreat of glaciers. The old age ends with either melting or retreat of glaciers. Can the question come, compare normal cycle of erosion with the glacial cycle of erosion? जैसे एक क्वेश्चन आ चुका है, normal cycle with arid cycle of Davis, chances are very, very less. Fine. Criticisms. Sorry, before giving my criticism देना भूल गया. Criticisms. How do you identify a base level? Tell me. Base level, you are a geographer, अब इतना knowledge ले लिया है. MA geography से तो ज़्यादा knowledge है, मैं guarantee दे रहा हूँ geography optional में. Fine. How will you identify a base level? सिर्फ PhD करना बाकी रह गया है आपको. मतलब practical geography में कैसे identify करोगे वहाँ पे जाके? नियर द सी लेवल वो तो हर जगह नहीं है, जहाँ पे मोर और लेस देर इज अ फ्लैट रीजन ऑफ प्लेन्स, फ्लैट है सरफेस, या रिवर उससे ज्यादा इरोड नहीं कर रही है, द टोपोग्राफी इज अ फ्लैट. हाउ विल यू आइडेंटिफाई अ बेस लेवल इन द ग्लेशिएटेड रीजन्स? रिवर तो है, पानी पानी ऐसे, और पानी कभी कभी साफ है तो आपको पता है डेप्थ क्या है वाटर की. ग्लेशियर में क्या है बेस लेवल? पता चला माउंट एवरेस्ट जैसा बड़ा माउंटेन वो थिक कवर ऑफ आइस के नीचे है. अंडरस्टैंडिंग? सपोज इफ देयर इज अ रिवर एंड रिवर इज फ्लोइंग, रिवर हमें साइड्स में रख के निकल जाएगी. इफ देयर इज अ स्नोफॉल हम पूरे दब जाएंगे उसमें. इफ यू आर माउंटेन्स, किसी को लगेगा ये पूरा फ्लैट टोपोग्राफी है बिकॉज इट इज अंडर द थिक कवर ऑफ आइस. 5 किलोमीटर, आर्टिक में 20 किलोमीटर थिक है कवर ऑफ आइस. इमेजिन 20 किलोमीटर. हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8.5 किलोमीटर. 2 माउंट एवरेस्ट उसके नीचे आ जाएंगे. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ ग्लेशियर. इसलिए डेविस की साइकिल हो ही नहीं सकती. बेस लेवल क्या है? वेदर दैट इज अ फ्लैट पेनेप्लेन और वेदर ग्लेशियर मेल्ट होने के बाद पता चला वहां पे माउंटेन्स है, यू कैनॉट इवन अंडरस्टैंड इट. Forget theoretically, even practically it is not possible. So, criticism. The glaciated regions or topography cannot be properly studied. Or the topography cannot be properly studied. Because of first inaccessibility and difficulty in identification of a base level.
Identification of a base level. Therefore, the cyclic aspect of the Daviesian theory, youthful stage क्या है, mature क्या है, old age क्या है, हमें पता ही नहीं है. It is the below the thick cover of ice. Therefore, the cyclic aspect of the Daviesian theory cannot be studied practically. Cannot be studied practically. Cyclic aspect of the Daviesian theory cannot be studied practically. Next point. Glacial peneplains as an end product of the glacial cycle of erosion as an end product or the near end product of the glacial cycle of erosion is not possible. देखो रिवर जैसा पॉसिबल नहीं कि पेनिप्लेन बन जाएगा. देयर मे बी सम अदर नेम फॉर इट बट दैट विल नॉट बी सेम. Hence the Daviesian cycle is mostly a theoretical proposition. Rather than a practical one, rather than a theoretical proposition कि शायद ऐसे ऐसे डेवलप हुआ, rather than a practical one. See, this is a Xerox copy of or printout of one of the famous book of geomorphology of Haggett. Fine? Not the one you shared. One more. There is a Chorley and Haggett. जो चोरले हम पढ़ते हैं, उन्हीं का book है ये. And you can see they are not at all following Davis. If you look at the chapter surface runoff in desert, मतलब the work of river in desert. Fine. 2-3 pages इधर आगे है. Water as a geomorphic agent in the land, arid landforms. Fine. इसमें से हमें फोटोज लेने हैं और जो जो मैं बोलूंगा वो वैल्यू एडिशन के लिए पढ़ना है, ऐसे नहीं कि उसको टोटली पढ़ना है. एंड देन आफ्टर सम पेजेस विंड एज ए जियोमॉर्फिक एजेंट. अनलाइक आवर बुक्स विच विल से इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ द डेजर्ट, विंड के इरोजन से, और फिर मैच्योर लैंडफॉर्म्स ऑफ द डेजर्ट एंड डिपोजिशन लैंडफॉर्म, एंड एंड करेंगे फ्लूवियो ग्लेशियल या फ्लूवियो एरिड. वो क्यों है? बिकॉज वी फॉलो डेविस इन इंडिया. अमेरिकन्स themselves आर नॉट फॉलोइंग डेविस, इसलिए वो प्रॉपरली अलग अलग कर रहे हैं कि कहाँ पे एरिड रीजन्स में वाटर का काम है, कहाँ पे विंड का काम है. फाइन. यूज दिस राइट नाउ एज आई एम टेलिंग यू, डिस्कसिंग विथ यू समथिंग. लिखो कुछ भी मत, नॉट इवन द रनिंग नोट्स. लास्ट में आप टेबल बना सकते हो, एंड उसमें से मैं कुछ कुछ जो पढ़ने बोलूंगा वो घर पे जाके आज आराम से पढ़ना. फाइन. Look at page number 498. Can you see king? Slope angle remains constant. Fine. Proper king है ये. Slope angle remains constant. Parallel retreat of the slopes. बीच में का landform गायब हो गया. But कुछ कुछ बचे हैं. These are Inselbergs. और अगर ये राउंडेड हो जाते हैं तो बोनार्ड हार्ट्स. फाइन. दिस इज एलुवियल फैन पर एलुवियल कोन आल्सो. देन यू हैव पेज नंबर 503 पे सैंड ड्यून्स. आई हैव गिवन यू दिस सो दैट यू कैन गेट द फोटोज
डायग्राम्स के लिए एक कुछ काम का नहीं है, एक्सेप्ट फॉर दिस डायग्राम इज वेरी गुड टू राइट एनी आंसर. एक तो डेजर्ट लैंडफॉर्म्स का, बट इवन इन इंडियन ज्योग्राफी, इवन इन जीएस, टू शो व्हाट इज डेजर्टिफिकेशन, हाउ द सैंड पार्टिकल्स आर ट्रैवलिंग फॉरवर्ड. फाइन. पिछले साल का जीएस का क्वेश्चन और पिछले से पिछले साल का ऑप्शनल का क्वेश्चन, डस्ट स्टॉर्म्स इन द रीजन्स ऑफ डेजर्ट्स. नेक्स्ट पेज पे फोटो, कैन यू सी? एंड देन जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जो यूपीएससी में पढ़ते हैं, जो छोटी छोटी चीजें, मशरूम रॉक्स, यारदांग्स एंड ज़्यूगेन्स, वेंटिफैक्ट्स, a rock which is generally triangular in shape, जो राउंडेड नहीं है, उसको क्या हम कहेंगे? वेंटिफैक्ट्स. Do this to stop desertification, dune protection. That is the answer to stop desertification. मतलब दो पार्ट्स है इसमें. इफ वंस यू रीड दिस देन आई विल टेल यू. अभी तो बोलने के समय समझेगा नहीं. ड्यून्स के कभी कभी फायदे भी है, उसका एक नुकसान है डेजर्टिफिकेशन, बस उसका एक फायदा है. सी हियर देयर आर नो मैनग्रोव्स इन द कोस्ट लाइन, सो टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सुनामी और स्टॉर्म सर्ज ड्यूरिंग द साइक्लोन्स, ड्यून्स विल बी टेकिंग द फर्स्ट इम्पैक्ट. And this is how bedrock channel is eroded. This is a perfect example of a bedrock channel. Now, before I start with this thing, come to page number 496, figure 18.8. You can see how this sedimentary rock has been eroded over the period of time. कैसे पता लगा है sedimentary rock? Can you see proper layers? And is agriculture now possible in this region? No. Agriculture is not possible in this region, and therefore you will call such topography as, क्या लिखा है उधर? बैडलैंड टोपोग्राफी. ये भी जीएस में है, रवाइन गली एंड बैडलैंड टोपोग्राफी. फाइन. बट what is not given in the diagram, and what as a student of geography you should be able to interpret from that diagram, the color change shows that once this region was very rich in water. इसलिए जो ज़्यादा देर पानी में था वो थोड़ा डार्क था, जो कम देर पानी में है वो लाइट है. एंड सी हाउ द वाटर लेवल हैज eroded over the period of time, and ये बन गया पूरा desert. So it is not surprising कि अगर ऐसा ही सेम डायग्राम अब या ऐसा ही सेम फोटो अब पंजाब का दिखने लग गया, यूपी का दिखने लग गया. तो फाइन. बैडलैंड टोपोग्राफी ड्यू टू एक्सट्रीम रिमूवल ऑफ ग्राउंड वाटर. डेजर्ट इज द इजिएस्ट ऑफ द ऑल द लैंडफॉर्म्स. अगेन ये सब डेजर्ट लैंडफॉर्म वो सब कब करना मैं टेस्ट में पूछूंगा भी नहीं. I'll stop myself at the glaciers and arid cycle of erosion. ये तब करना कि पूरा ज्योग्राफी जब खत्म हो चुका और आपको अब कुछ करने का बचा नहीं है, then desert landforms. Otherwise only the cycle of erosion.
4 types. One is abrasion. Matlab, what is abrasion? You now know what is abrasion. What is abrasion? When any agent of erosion carries sediments and they hit the stones or channel of a river या कोई mountain. So because of this, the mountain या river channel or stone gets eroded. That is what is known as abrasion. Getting it? Abrasion by sand is also known as विंड की इनएबिलिटी है, हवा किसी बड़े पत्थर को उठा के नहीं ले जा सकती, एंड देयरफॉर इट ऑकर्स ओनली नियर टू द ग्राउंड. You already know इसका impact. What is this impact? Only lower layers of the rocks is eroded, and this is known as an mushroom rock. Fine. Deflation. कहाँ तक इरोड करेगी? जहाँ तक रॉक का लेवल है. This is not that important. ये सिर्फ इसलिए पता होना चाहिए कि suppose if this rock has
water, when water level will be exposed and फिर oasis बनेगा. This is how the oasis is formed. These are the three ways of desert erosion. No solution, no hydraulic action. विंड में इतनी ताकत नहीं होती कि पत्थर को तोड़ के लेके जाए. फाइन. Is river an important source of erosion in deserts? Yes. नहीं तो chapter में इतना होता नहीं. But what is the difference between the river in the desert and the river in the normal cycle of erosion? Deserts ka river are only present during the rainy season. If there is a snowfall or if there is a rainfall, then there will be river. Fine. One point of difference. I am doing all this so that you can understand a question regarding the arid cycle of erosion, nothing else. Fine. So one point of a difference between the normal cycle of erosion is river is continuous. यहाँ पे river is seasonal. बस इतना ही. Fine. वहाँ पे रिवर जाएगी, नीचे जाएगी और बड़ी बनेगी, and thus it will do U-shaped erosion and it will form a very big river to form a flood plains. यहाँ पे river will do the erosion, carry the sediments, deposit it along the foot of a mountain and वहाँ पे lake बनाएगी. नदी नहीं बनाएगी, सिर्फ lake बनेगा क्योंकि उसको tributaries ही नहीं है. Fine? What is a lake? Temporary water level. Remember in geography, lake is always a temporary feature. कोई भी lake है world में वो हमेशा मरेगा क्योंकि it does not have a source of fresh water, continuous fresh water, except for Dal Lake because Dal Lake में से झेलम खुद जाती है. Fine? Except for lake, Wooler Lake, not Dal Lake. Wooler Lake, Dal Lake तो मरेगा कभी ना कभी. चिल्का लेक जिंदा रहेगा, but कोलेरू लेक मर सकता है कभी भी. Fine? So यहाँ पे लेक जो बनेगा it will be initially having water but later on due to high heat during the summer season water will melt and सिर्फ sediments रह जाएंगे. वो sediments saline होंगे and as a result of this such lakes are known as playas or salinas. सिर्फ इतना याद रखना word कौन सा? Playa. So this process by which the pediments are formed, pediments means deposits along the foot of the mountain is both in King as well as in Davis. King, obviously we have done it. Question is Davis ki normal cycle of erosion versus Davis ki arid cycle of erosion. I don't know whether it is present in the Samindra Singh or not. It is given good in P. Dayal and Thornbury. Fine. So, secondly, over the period of time, this pediments will increase in size because erosion will keep on occurring every rainy season and thus the entire topography will become very flat. But the only difference is maximum relief, not maximum height. Maximum relief. You know what is the difference in relief and height? Relief is distance between the topmost and the bottommost part. In the Davis ka normal cycle of erosion occurs in the mature stage. उस stage में है maximum relief feature. हमने लिखा नहीं है क्योंकि वो इतना important नहीं था तब. But in the arid cycle of erosion of Davis, maximum relief occurs in the youthful stage only. And same what maximum relief in the King also occurs in the youthful stage.
easy, कोई लिखने की जरूरत नहीं. Only the lower part of the rock is eroded because rivers cannot, the winds cannot carry large amount of sediments. Wind does not have any specific direction. Wind flows from all the direction. इसलिए all sides of the rocks will be eroded equally, and hence mushroom rocks or pedestal rock. Getting it? You saw the photo? What does it mean? When the hard and soft rocks are arranged in vertical manner alternately, then which rock will be eroded more? Softer rocks will be eroded more, and as a result of this, harder rocks will be less resistant to erosion, softer rocks will be eroded more. Harder rocks less resistant, softer rocks more, harder rocks less, and hence this will give rise to a topography in which the softer rocks has got eroded, and this is what is known as an yarda. Fine, ये डायग्राम. या फिर whatever the diagram you can choose to draw. I'll prefer second one. Ridge, furrow मतलब a valley. So ये जो रास्ते हैं of the soft rocks,
These are known as furrows. So what is this furrows? What is इसका use? इसमें से जाएंगे trucks, इसमें से जाएंगे camels. This will be used as natural highways in the desert. You see here, yardangs, after they get eroded, and you can see a car here. Getting it? These are the yardangs. Fine. When they are arranged in the horizontal manner. इसमें no 3-dimensional diagram. हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, ऐसे हो सकता है ऐसे अरेंजमेंट. फाइन, हो सकता है नहीं. आई हैव जस्ट शोन यू द फोटो. Which rock will be less eroded? Hard rock. But once the soft rock is exposed, it will be eroded much greater. Fine. And उसके बाद फिर से hard rock will be eroded much lesser. जहाँ से wind. इसीलिए I'm shading the hard rock. This is the soft rock. This is again the hard rock. कुछ जगह इन्वर्टेड, कुछ जगह सीधा. इंक पॉट टोपोग्राफी, पहले जमाने का इंक पॉट. फाइन, अभी का नहीं. इंक पॉट टोपोग्राफी.
ज़्यूगेन. ऊपर का रॉक हैज नॉट बीन इरोडेड, बीच में का रॉक हैज बीन इरोडेड, नीचे का रॉक फिर से इरोडेड नहीं. दिस इज अ मैन स्टैंडिंग. फाइन, दिस इज व्हाट इज द ज़्यूगेन. गेटिंग इट? You already know what is mesa and bate? याद है? मैंने एक डायग्राम दिखाया था, नीचे से दिस प्लग इज कमिंग, ऊपर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है. सो जहां जहां वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, दिस सॉफ्ट सेडिमेंट्री रॉक इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग इरोडेड. जहां नहीं है वहां इरोड होते गया टू फॉर्म कैनियंस. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेसा विल रिड्यूस इन हाइट एंड दे विल बी नोन एज बटेस. देखो इन सब में शॉर्ट नोट अगर आ सकता है तो सिर्फ मेसा एंड बटे पे. एंड इट इज सो इजी दैट अगर नहीं भी पढ़ना है तो सिर्फ मेरी एक लाइन याद रखना. It is a region in which the upper rock is hard because of volcanic origin. This hard rock protects the lower soft rock from getting eroded. Differential erosion in unexposed parts of hard and the soft rock erodes the soft rock to form very deep gorges, while the hard rock remains as a tabletop mountain known as mesa. Over the period of time, the height of the mesas will be reduced and they will form buttees. That is the same photo we saw on page number 498. At the top, getting it? Mesa and bate. Figure 18.11, 18.11. And come to the previous page. Figure 18.10, they have showing you what is a mesa and bate. So you will have to read first. जो कैजुअल रीडिंग देना है, सी दैट इज पेज नंबर 496. उससे एक पहले पेज पे जहां से प्लाटू शुरू हो रहा है वहां से पूरा पढ़ना है. 497 you will have to read completely. 498 you have to read completely. 499 you will have to read completely. 500 obviously कुछ है ही नहीं उसमें, it is so small. Completely. And 501 completely. Fine. But again, what I am saying, read करना है, just a value addition.
याद कुछ नहीं करना है, याद ऑब्वियसली प्रिंटेड नोट्स में से, जो मेरे हैंड रिटन में है उसमें से। I'll explain you what is this one by one. See, when the river is coming downwards in this region, river will keep on depositing large amount of sediments. The river ka sediments will start getting here from the Piedmont zone to form alluvial fan or यहाँ पे alluvial cone. This will result into formation of an alluvial fan or cone. As the alluvial fan यहाँ पे increase हो जाएगा, so ये पूरा region ऐसे U shape बन जाएगा, because the sediments will keep on increasing. Because the sediments will keep on increasing, जब पानी होगा rivers में, यहाँ पे center में lake तैयार हो जाएगा. So this entire zone, Piedmont zone, is what is known as an bajada. What are the different types in bajada? Alluvial cone. इसलिए मैंने यहाँ पे alluvial cone नहीं लिखा है. Bajada is from the foot of a mountain, alluvial cone से center तक. Fine. At the center of a bajada is a lake, and that lake is what is known as an playa. Fine. इसलिए ये important लिखा है क्योंकि short note आ सकता है on the bajada, and उसमें ये सब आएगा. When the water evaporates from the playa, जो हर summer में होगा, these lakes are one of the richest source of salt, and this therefore they are also known as salinas. Getting it? Fine. What is a dune? You already know what is a dune. Continuous deposition of a sand. Now understand? Shrub hai. And as a result of this, if the deposition of the sand starts occurring in such a manner कि dune ऐसे बनते गई and ऐसे form हुई dune, which is growing perpendicular to the direction of the sand, it is known as barchans. Fine. If the dune is formed, that is, you can see the photo of barchan on page number 503. And page number 502 पे you can see playa, जब पानी है, that is entire bajada. पानी है वो प्लाया, और नीचे जब पानी नहीं है तो वही प्लाया बन जाता है सलीना.
सो फिगर 18.8 में पढ़ रहा हूँ. द व्यू ऑफ डेथ वैली शोज द डिपॉजिट्स ऑफ सॉल्ट लेफ्ट बिहाइंड बाय इवेपोरेशन primarily of the groundwater derived from the surrounding mountains. Fine, this is what is the salina. This handout is just given so that you understand the photos. Fine, पढ़ना नहीं है हमें इसमें से ज़्यादा. Secondly, if the wind is flowing constantly in one direction, एक ही डायरेक्शन में बहुत हाई स्पीड से जा रही है, सो क्या होगा, जो भी रॉक्स है, जो भी सैंड है, विंड उठाएगी और साइड में डिपॉजिट करते जाएगी. एडी करंट, जब गाड़ी बहुत तेज जाती है तो पानी साइड में फेंकती है. फाइन, जब विंड गाड़ी बहुत तेज जाती है तो धूल आपके ऊपर फेंकती है. सिमिलरली व्हेन द विंड, दिस इज ऑल एडी करंट्स, सेंट्रल पार्ट फ्लोज विद ग्रेट स्पीड, बाजू में फ्रिक्शन है इसलिए वो. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सैंड ड्यून्स फ्लो पैरेलल टू ईच अदर, दे डोंट गो perpendicular, they will go parallel to each other, long. Such long sand dunes are known as seef. Fine, क्या है ये? Longitudinal sand dunes. And lastly, when the wind is blowing from all the directions, wind is blowing, suppose this is a top view, fine, this is my imaginary land, wind is blowing from this direction depositing the sand here, and ऐसे sand को deposit किया. अब next time wind यहाँ से आ रही है, ऐसे sand को deposit किया, next time wind यहाँ से आ रही है, ऐसे sand को deposit किया center में. So this kind of a dune is star shaped dune. That is I have the photos of this. It is not present in the book because star shaped dunes are not found in USA, जहाँ पे ये book लिखी है. Fine. Getting it? What is the difference? Star shaped dune क्वेश्चन आएगा, प्रिपेयर करना है आपको, जिंदगी में कभी नहीं. फाइन, नॉट इवन इन जीएस, क्योंकि वो बहुत, कभी विंड यहाँ से आ रही है, यहाँ पे इकट्ठा हो गया, कभी विंड वहाँ से आ रही है, वहाँ पे इकट्ठा हो गया. सीफ वेरी वेरी लेस चांस. क्यों नाम है उसका सीफ? बिकॉज तलवार, सीफ मतलब तलवार, तलवार जैसे सीधे होती है अरेबिक लोगों की. इट इज नॉट कर्व लाइक आवर्स इंडियन, उनकी वो सीधी और पॉइंटेड होती है, एंड देयरफॉर इट इज नोन एज सीफ. बारचांस और सीफ में फर्क क्या है? बारचांस आर ऑलवेज फॉर्म ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन. फाइन, सीफ इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द नॉर्मल केसेस, बारचांस आर फॉर्म ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन. बस इतना ही फर्क है. सो विल मीट ऑन मंडे. फाइन, and before, so when you want test tomorrow, Monday, tell me the time. I want each and you to write. Monday ka means you will have to write after the class, 5:30 to 7:30. So when you want it, जिनका शाम में क्लास है वो थोड़ा जल्दी आके, ये रूम खाली होती है फॉर द टेस्ट, so you will have to write it on Tuesday etc. अच्छा, कल एग्जाम है CAPF, फिर ट्यूसडे. फाइन, how many of you are attempting CAPF? Only one. Baki all have crossed 25, I guess. It's a good exam. Next year form भरना याद से.